May I request Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, to enlighten the gathering. Ms. Kristalina Georgieva, CEO World Bank, my colleagues in the Council of Ministers, senior officials, business leaders, ladies and gentlemen, आज गुरु पर्व का पवित्र अवसर है। गुरु नानक देव जी का पुण्य स्मरण देश की एकता, सत्यनिष्ठा और सत्व से भरे जीवन के लिए प्रेरणा देता है। 2 वर्ष के बाद गुरु नानक देव जी के 550वां प्रकाश पर्व मनाने का पूरी मानव जात को अवसर मिलने वाला है। ऐसे जगत गुरु को प्रणाम करते हुए मैं आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूं। I'm very happy to be here today. I sense a well-deserved mood of celebration here. The World Bank has recognized the stupendous work done by us towards improving ease of doing business. We are now among the top 100 countries in the doing business rankings. In a short time of 3 years, we have improved 42 ranks. I thank Ms. Kristalina Georgieva for being with us on this joyous occasion. It shows World Bank's commitment to encourage nations to undertake reforms which benefit society and economy. Her presence today will motivate our team to do even better in the coming days and months. Over the last 3 years, I've been constantly telling the domestic and foreign investor community that we in India are making sincere efforts to improve ease of doing business. And friends, India has walked the talk. This year, India's jump in ranking is the highest. India has been identified as one of the top reforms. Congratulations to all who have worked for this. You have done the nation proud. This improvement is important because it is an indicator of good governance in the country. Because it is a measure of the quality of our public policies. Because it is a benchmark of transparency and processes. Because ease of doing business also leads to ease of life. And ultimately, it reflects the way people live, work, and transact in a society. Friends, but all this is for the benefit of concerned stakeholders. For me, the World Bank report shows the quantum change in possible through commitment and hard work. Continued efforts can help us improve even further. और वैसे भी आप जानते हैं, मेरे पास और कोई काम तो है ही नहीं।
वन लाइफ वन मिशन, यही काम है। मेरा देश, मेरे देश के 125 करोड़ लोग, उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना, और इसलिए जो अपेक्षाएं दुनिया हमसे रख रही है उसे पूरा करने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और इसलिए 142 में से 100 आने के बाद मुझे सोने का मन नहीं करता है और अधिक करने की इच्छा जगती है। I say this because India has reached a position from where now it is easier to improve further. Our efforts have gathered momentum. In management terms, we have achieved critical mass for a swift takeoff. For example, this report has not taken into account the implementation of the Goods and Services Tax or GST. As you all know, GST is the biggest tax reform in the Indian economy, and it impacts many aspects of doing business. With GST, we are moving towards a modern tax regime which is transparent, stable and predictable. और इसलिए जब जीएसटी की चर्चा हुई है तो मैं कहना चाहूंगा, और व्यापार जगत के लोग यहां बहुत बड़ी मात्रा में हैं, तो मैं यहां इस फोरम के माध्यम से देश भर के व्यापारियों से भी कहना चाहता हूं कि जिस समय हमने जीएसटी लाने का संकल्प किया तब लोगों को लगता था आएगा कि नहीं आएगा, 1 जुलाई को होगा कि नहीं होगा। हुआ, फिर होने के बाद लगा कि हम मर गए, ये मोदी है, कुछ सुधार नहीं करेगा। और हमने तब कहा था कि हमें 3 महीना इसको बारीकी से देखने दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा है और दिल्ली में ही बुद्धि भरी हुई है ऐसा नहीं है जी। देश के सामान्य मानवी के पास भी समझ है, हम उसे समझेंगे, सीखेंगे, कठिनाइयों का अंदाज करेंगे, रास्ते खोजेंगे, और 3 महीने के बाद जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जितनी चीजें सामने आई उसका समाधान किया। कुछ चीजों के लिए काउंसिल में कुछ राज्य सहमत नहीं थे, तो हमने राज्यों के मंत्रियों की और अधिकारियों की कमेटियां बनाई। और मुझे आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि अभी वर्बेटिमली तो रिपोर्ट मेरे पास पहुंचा नहीं है, लेकिन जो मैंने मंत्रियों की कमेटी जीएसटी काउंसिल ने बनाई थी, उन्होंने मिलकर के ही बनाई थी, और उस मीटिंग में जो हुआ है और जिसकी छोटी मोटी जानकारी मेरे पास है, पूरा रिपोर्ट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जितने इश्यू सामान्य व्यापारियों ने उठाए थे, कारोबारियों की तरफ से जितने सुझाव आए थे, करीब करीब सारे विषयों को पॉजिटिवली स्वीकार किया जा रहा है। और 9 और 10 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अगर कोई राज्य कठिनाई पैदा नहीं करेगा तो मुझे विश्वास है कि भारत के व्यापार जगत को और भारत की आर्थिक व्यवस्था को नई ताकत देने में जो भी आवश्यक सुधार होंगे वो किए जाएंगे। उसके बावजूद भी आगे भी ऐसी कोई बातें आएगी, क्योंकि आखिरकार एक नई व्यवस्था को स्वीकार करना होता है, सालों की पुरानी व्यवस्था से बाहर निकलना होता है, तो सरकार का ही दिमाग काम करे जरूरी नहीं है, सभी स्टेक होल्डर का दिमाग काम में आता है, तब उत्तम से उत्तम परिणाम आता है। और जीएसटी देश के लिए उसका भी एक उत्तम उदाहरण बनने वाला है कि सबकी भावनाओं का आदर करते हुए
व्यवस्थाओं को फुल प्रूफ कैसे बनाया जा सकता है, ये जीएसटी की प्रोसेस से नजर आता है। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में मई 2017 तक के ही रिफॉर्म्स काउंट हुए हैं, जबकि जीएसटी उसके बाद जुलाई 2017 में लागू हुआ है। और इसलिए आप अंदाज कर सकते हैं कि जब 2018 में जब चर्चा होगी, तब हमारे रैंक के लिए ये सारे हमारे जो इनिशिएटिव है और जुड़ने वाले हैं। देयर आर मेनी अदर रिफॉर्म्स which have already happened but need gestation and stabilization time before they are taken into account by the World Bank. There are a few other reforms where our team and the World Bank team need to find common ground. All this combined with our conviction to do even better gives me the confidence that India will occupy a place of a pride in the World Bank report next year and in the year thereafter. I compliment the World Bank for engaging with countries to improve ease of doing business across the world. I also compliment them for the theme of this year's reporting, reforming to create jobs. There can be no denying that business is a major force in our lives. It is the engine for growth, employment, wealth creation, and delivery of goods and services that make our lives comfortable. We are a young country, and a job creation is an opportunity as well as a challenge. Therefore, to leverage the energy of our youth, we are positioning India as a startup nation and a global manufacturing hub. For this purpose, we have launched various initiatives such as Make in India, Startup India. Through these initiatives, combined with the new ecosystem of a formal economy and a unified tax regime, we are trying to create a new India. An India where opportunities are created and harnessed to the advantage of the needy. We are particularly keen to develop India into a knowledge-based, skill-supported, and technology-driven society. A good beginning has been made through the Digital India and Skill India initiatives. Friends, India is swiftly changing for the better. I wish to list some more global recognitions which indicate this. We have moved up to 32 places in the last 2 years in the Global Competitiveness Index of the World Economic Forum. This is the highest for any country. We have also moved up 21 places on the Global Innovation Index of WIPO in 2 years. We have moved 19 places on the Logistics Performance Index of 2016 of World Bank. We are among the top FDI destination listed by UNCTAD. और सारा इतना मैं बता रहा हूं, कुछ लोगों को भारत की रैंकिंग 142 से 100 होने की बात समझ नहीं आती है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले वर्ल्ड बैंक में रह चुके हैं। वो आज भी भारत की रैंकिंग पर सवाल उठा रहे हैं।
यदि मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, यदि इंसॉल्वेंसी कोड, बैंकरप्सी कोड, कॉमर्शियल कोड, अगर ऐसे कानूनी सुधार आपके समय में हुए होते तो हमारी ये रैंकिंग आपके सौभाग्य में नहीं आती क्या? देश की स्थिति नहीं सुधरती क्या? लेकिन किया कुछ नहीं, और जो कर रहा है उसको सवाल पूछे जा रहा है। वैसे ये भी संयोग की बात है कि वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया साल 2004 में शुरू की थी। बड़ा महत्वपूर्ण ईयर है। और इसके बाद 2014 तक किसकी सरकार रही ये भी आप सबको पता है। मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूं, उसने वर्ल्ड बैंक का बिल्डिंग भी नहीं देखा है, जबकि पहले वर्ल्ड बैंक को चलाने वाले लोग यहां बैठा करते थे। मैं तो कहता हूं कि वर्ल्ड बैंक की इस रैंकिंग पर सवालें उठाने के बजाय आइए हम मिलजुल करके अपनी कमियों को एड्रेस करें, एक नई ताकत को जोड़ें और नए सपनों को लेकर के, नया संकल्प लेकर के न्यू इंडिया बनाने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़े। Our mantra is reform, perform, and transform. We want to do better and better and better. I'm happy to note that for the first time, the World Bank is helping us in this exercise at the sub-national level too. भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों को भी इस विषय में ट्रेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहां बहुत सारे निर्णय राज्य के स्तर पर होते हैं या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लेवल पे होते हैं, म्युनिसिपैलिटी करती है। और मैं खुश हूं कि वर्ल्ड बैंक हमें वहां तक काम करने में मदद कर रही है। इन अ फेडरल डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, it is often not easy to take on board every stakeholders while undertaking reforms. However, over the last 3 years, there has been a sea change in the response of governments, both at central and state level. State governments are finding innovative ways to create a business-friendly environment. While often competing with each other in implementing business reforms, they are also helping each other in implementing them. This is an exciting universe in which competitiveness and cooperation coexist. Friends, the agenda for boosting growth and employment required many structural changes, many tough decisions, and many new regulations. Besides this, the mindset of the bureaucracy required change to enable them to work fearlessly and honestly. Over the last 3 years, the union government has done a lot on these fronts. We have resolved a number of regulatory and policy issues facing business and companies. Along with manufacturing, we are also pushing for faster progress in infrastructure sector. Therefore, we are continuously working to improve our investment climate. In the last 3.5 years, we have undertaken bold foreign direct investment reforms in 21 sectors, covering 87 areas of policy. मैं 2 साल तक सुनता रहता था, बिग बैंड रिफॉर्म। अब लोग बंद कर दिया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये रिफॉर्म की लेवल और साइज इतनी है, स्पीड इतनी है कि मैच ही नहीं कर पा रहे, आलोचना करने वाले भी मैच नहीं कर पा रहे। These reforms have touched
significant sectors like defense, railways, construction development, infrastructure, pension, civil aviation, and pharmaceuticals. More than 90% of the FDI approvals, और ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, 90% approvals have been put on the automatic route. We are now among the most open economies for foreign direct investment. This has resulted in increased FDI inflow, which year after year is making new records. The FDI inflows of 55.6 billion US dollars for the year during March 2016 were an all-time high. The following year, India registered an FDI inflow of 60.08 billion US dollars, thereby scaling an ever higher peak. As a result, the total FDI received in the country has gone up by 67% in a short span of 3 years. During the current fiscal year till August, the total FDI of 30.38 billion US dollars has been received, which represents an increase of 30% as compared to the corresponding period last year. In August 2017, India received a total FDI of 9.64 billion US dollars, which is the highest ever FDI received in any month. Friends, over the last 3 years, we have systematically and critically evaluated business regulations. We have tried to understand the